So we are talking about study abroad. My name is Manish Saraf and I connect to you from Universal Tutorials. Welcome to this webinar once again. These webinars that we do on Sundays, they are a part of our value-added lecture workshops that we do to promote awareness, to spread awareness, so that students at very important juncture in their life take important, informed decisions. This is ninth in the series this year, 2024. This is the ninth session that we are doing on study abroad. So the ninth lecture है हमारा workshop है, and theme today is study abroad. Following Sundays, we'll have more such themes. You need to follow us. That is UT's Facebook page, Instagram page, and you should see a lot of it there. Now, going forward, what is that we are going to cover today? So we are going to talk about, I'll quickly talk about what is that we do, who we are, then the overall students' experience when they have gone abroad. To speak video play karunga main, you will be able to hear some of our students. Then to the core of this presentation, where I'll speak about what is this option of studying abroad. Now, while I'm doing these talks, if you have any questions, do write them down. Towards the end, you can unmute and ask your question. If in case your bandwidth permits, which I'm sure bandwidth is not an issue, if your environment permits, you should keep your video in an on mode, audio muted or video on rakhiye, because then that helps me as a speaker to make those virtual eye contact and keep my tempo up. So agar possible hai aapke liye, please keep your video in an on mode. That's a request. Going forward, I'll also talk about various UT program options. How do we help you and what are the services that are available? And towards the end, an open house to take your questions around the study abroad theme that we have. Chaliye, about UT, so we are Universal Tutorials, born in 1998. It's been more than 25 years for us now, where we have been servicing students across India, and we have influenced and coached and trained and counseled more than 35,000 students in our journey so far. We have 6 branch locations in Navi Mumbai, and we serve Pan India using our technology platform for delivering courses and advisory, consultancy, all that we do through these platforms. So this is about us. There are 3 broad verticals. The first is board exam. So this is the vertical through which we started way back in 1998, where we prepare students for CBSE and ICSE board exams through our coaching and test series program. Then we also prepare students for Indian exams like medical, IIT engineering, JEE, IPM management entrance exams, and so on. And where I'm talking to you today from is my study abroad vertical. Now, my study abroad vertical is where I'm bringing this talk to you, where we help students with coaching, where we help them with advisory, consultancy, university placements, visa. So हम ये सब करते हैं. And let me say a special thanks to Aradhya for, at least I can see one student now. Thank you. Keep your video on. That helps me more than you. Thank you. So these are the 3 broad areas that we work into, और आज हम study abroad पे बात करेंगे. So what do we do at study abroad in UT? Quickly मैं आपको बता देता हूँ. We do undergrad, 12th के बाद वाली पढ़ाई के लिए we do undergrad SAT exam preparation. If you are planning to do masters, we do GRE exam preparations. We do English exam preparations, TOEFL, IELTS. ये क्या है मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ. And then we do and help students with university application, which is a very, very exhaustive process. इन सब के बारे में क्योंकि मैं वेबिनार में बात कर रहा हूँगा, I think I will speak to you then. चलिए, so before I proceed, it will help me understand the constituent of my audience today. एक छोटा सा Zoom poll आएगा. अभी आपको कोई response नहीं देना है, वो poll पे देना है. In case you are in your 9th and 10th standard, आपको option A pick करना है. अगर आप 11th standard में हैं, you have gone to 11th, you have given your 10th board exam and you will be going to 11th, so you pick B. If you have come from 11th to 12th now, pick C, and if you have passed your 12th or given your board exam this year for 12th, you pick D.
Sharad, can you please put up the Zoom poll? Please pick one option that suits you best. And accordingly, this will help me, tailor my talk as per the configuration today, the composition today. Okay. Okay, Sharad has ended the poll. So the result is that there are close to 50% audience which is in 12th standard, come to 12th. Then there are 33% students in 11th, and there's one student who is in 9th and 10th. Perfect. So I will ensure that, thank you. You can stop share now. Sharad, poll band kar do. Thank you. So I will tailor my talk accordingly. आगे चलते हैं. So, like I said, I will be sharing some student experience. So, इससे पहले कि मैं crux of matter पे आऊँ, let's hear what our students, past students at UT have to say about this program and about studying abroad. Here I go. Hello everyone, my name is Manish and I will be attending the University of Massachusetts at Amherst from this fall 2022. I have been with UT since the past 4 years and I have always admired the structured approach they take towards all the programs that they offer. The study abroad program is no exception. Anubhav sir and Manish sir guided us personally through the various steps of applying to the US, from giving the SAT to selecting the universities that match my profile. This wouldn't have been possible without Anubhav sir and his team. I'm Pradeep Mahakud, father of Arnav Mahakud, who has been a student of University Tutorial under the guidance of Anubhav sir. And I'm very happy and to say here something. My son has got an admit UW Medicine undergraduate program in computer science major. So we are parents of Ashwin Deshpande. So we were quite reluctant about allowing Ashwin to go and study abroad, and we looked at SAT only as a means of getting into BITS because his elder brother was there. And from there to today, where Ashwin is enthusiastic about going to Purdue and we have embraced the concept that he'll be there, has been a long journey, but UT has held our hand at every step of the way. Now they have guided us, they have given us all the information required and more, but allowed us to make our own decision. No, I think it's a very professional team, but a very important personal touch. So everything they have all the information, but they take into account the child's and the family's needs. So I think it's very exclusive and it's very individual. Hello, this is Professor Mangesh Mohan. I'm working as a principal in Padre Bandra. It's a polytechnic college. The thought of study abroad came to my mind in the month of August-September. We were very much serious about getting into any of the NITs, not IITs. But then he changed my thought process, provoking me to go for study abroad, and he informed me about the kind of universities and the kind of education system, let's say what US has got. So when I asked my wife, that time we were a bit skeptical of here. But then when I asked Gaura, what is your choice? That time he said, I want to give it a try. And I told him, I can take a risk of, 2 lakh rupees, wherein I will spend some money for training purpose. And then at the same time, I made him understand that he has to concentrate both on JEE as well as this SAT and all. He got the admit from Arizona State University with the scholarship. We thank UT for giving this opportunity for my son to go to one of the finest university in the US. Thank you, UT. Let's see if this video plays. This is a video from one of our Ivy League admits, Kavya Jairam. I'm trying. Maybe there's some issue. So let's go ahead. We move to
the next part. So coming down to the crux of presentation today, which is about study abroad, I will try and answer these major concerns. मैं इन बिंदुओं पर आज बात करूंगा. I will try and answer when, how, what, where about study abroad. How can this be your plan B if you want to make plan A India? क्या आप एक बैकअप में plan B बना सकते हैं? I will talk about that. And also I will address the issue of cost, scholarship, financial aids. So these are some of the major concerns which I will try and address in talk today. So coming down to study abroad and then answering these important questions: when to study abroad, how do you go about studying abroad, what is studying abroad, where can you go for your studies? I will answer all of these questions. So when it comes to when, there are two important entry points from an Indian perspective, Indian students perspective, that is after 12th, schooling karne ke baad, students go for graduation, for their bachelors, and they get degrees like BSc, BS, BTech, BA, which could be 3 or 4 years. And the second common route is after graduation. After bachelor's India se kiya, after you finish your bachelor's, you go for your master's, which could be 1 to 2 years, and you may go for degrees like MA, MS, MTech, ME, MSCs, and so on. Now, when is a very important question now, because you see that traditionally Indian students would go for masters. But over last couple of decades, I should say, the trend is shifting now because of more awareness, more affordability, more prosperity. Students are becoming more aware and sensitive, and they have a need of studying abroad even after 12th. So option 1 after 12 is gaining, or I should say has gained a lot of importance from students and parents. So how do you go about studying abroad? कैसे जा सकते हैं? You will see that there are two major routes जिसके through आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं. I will say the first route is non-merit and the other route is called merit route. Now I'll try and explain you what is a non-merit route and what is a merit route. So non-merit route is a route which is largely driven by the financial muscle, जिसमें you get low rank universities, low to high cost universities इसमें आपको मिलती हैं. They may not be requiring lot of good academics, or academic requirement may be very low. तरीका क्या होता है? There are commission agents, वो hotels में अपना fares लगाते हैं. You visit them, you give them the basic documents, pay the fees and get the admission. Very, very simple. End result, if you are looking for a study abroad का stamp, वो मिल जाता है. But otherwise, jobs, permanent residency, अगर आपको वहाँ रहना है, job करना है, ये सब आपको खुद manage करना पड़ेगा. The primary reason is your universities are not ranked, and that can create lot of problem. So merit route क्या है? Merit route of studying abroad is you get into highly ranked universities, you get into universities where they value your academics, where they value your portfolio more than your financial muscle. वो तो चाहिए ही, but more than that. So you get low to high cost universities, and then there are scholarship options. Process is you'll have to write some exam, you'll have to create your own portfolio, you'll have to apply and then get admission. End result, this is fantastic end results that you have. You get good placements, you have chance of staying in that country, you have chance of working into that country because you are passing out from reputed universities. Sundar Pichai, after doing his bachelor's, master's करने ये इसी route से गए, and he needs no introduction. हम सबको पता है ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या अचीव किया. So coming down to focus area today, my focus area would be merit route. मैं आपको वो I should say the right path बताने की कोशिश करूंगा, and I'm not talking about non-merit. So how does merit route work? वो बताने के पहले let us take a comparison between India and abroad. So you know how it happens in India? In India, basically, whatever career you choose, you may have to take a separate exam after 12th or during 12th
for that higher education alternative or option you have taken. तो अगर आपको IIT करना है तो आपको JEE देना है या मल्टीपल एग्जाम्स देने हैं, आपको बिटसैट देना है, आपको VIT का एग्जाम देना है, सो ऑन. आपको मेडिकल करना है, यू हैव टू राइट नीट. आपको डिजाइन करना है, यू हैव टू राइट NIFT, NID. आपको आर्किटेक्चर करना है, यू हैव टू राइट एग्जाम नाटा. आपको होटल मैनेजमेंट करना है, आपको उसका एक एग्जाम देना है. CA करना है, उसका अलग एग्जाम देना है. And all exams during or after 12 board exams. Now, this is unique about studying abroad. If you're planning to study abroad, exam एक ही देना है. The field could be engineering, commerce, economics, management, film, arts. आपको कुछ भी करना है, exam एक ही देना है, which is SAT, Scholastic Aptitude Test for all streams. And the entire process, right from preparing to appearing for exam and making application, ये सब 12th के पहले ही खत्म हो जाएगा. I'll explain that in more detail. So when we say, study abroad, the merit route, you are writing basically one exam, SAT लिखना है आपको for all streams, and this is to be taken ideally before your 12th board exams और आपके applications लग जाते हैं. ये timeline मैं समझाऊंगा. But this is how the merit route for foreign education or foreign universities work. So I was talking about one exam, which is one single exam, which is called Scholastic Aptitude Test. If you are planning to do undergrad, you must take this test, which is called SAT. Let's try and understand what is SAT. Let me explain you what is SAT. Now, SAT exam is an exam which is conducted by a body called College Board. जैसे आप इंडिया में आपके इंजीनियरिंग एग्जाम्स NTA करता है, उसी तरह से SAT एग्जाम एक US बॉडी है जिसका नाम है कॉलेज बोर्ड, वो कंडक्ट करता है. This is for admissions to undergrad courses after 12 for not only US but for some major universities across the world. So you will see US, Canada तो SAT accept करते ही हैं, but but universities in Australia, New Zealand, Singapore, UK will also accept SAT, and if you get a good score, it helps you a lot with your admission and scholarship decisions. Indian universities also, some of the Indian universities also have started accepting SAT score. So ये SAT exam क्या है? It happens multiple times a year, तकरीबन 7 times, 7 बार, as I speak to you, 7 बार exam होता है. You can take it multiple times. You can take it any time you want to. Every time you take this exam, fees is $100+. आपको वो fees भरनी है और आप exam ले सकते हैं. Scores on SAT exam are valid for 5 years. आपके exam taking day से 5 साल तक आप program वो score valid है, and you can apply with those scores. If you write SAT multiple times, तो जो आपका best score आता है, वो best score report होता है. This is a very interesting thing about this. You have the rights to share your best scores, and best scores are reported to universities for admission decision. So I hope यहाँ तक आपको चीजें clear हो गई. SAT exam देना है, multiple times होता है, $100+ लगेंगे, and it happens in a digital form. SAT आपको आपका डिवाइस कैरी करना है, टेस्ट सेंटर पे जाना है, उनके वाईफाई से कनेक्ट करना है, टेस्ट डाउनलोड होगा और आपको टेस्ट करना है. तो टेस्ट हैपेंस डिजिटली. नाउ इफ यू लुक इनटू द मेकअप ऑफ डिजिटल SAT, ये टेस्ट के अंदर क्या है? दिस टेस्ट हैज 2 sections. One is English reading writing section, where you get 54 problems and you are supposed to do it in 64 minutes. So ये English का section है. Then there is a math section, 44 problems divided into 2 modules and to be done in 70 minutes. So overall, the test that we are talking about is slightly more than 2 hours digitally to be taken. इसमें एक break भी मिलता है. Each English section or math section would have 2 modules, module 1 and 2. SAT का score range is between 400 to 1600. Minimum score 400 आता है, maximum score 1600 है, which is 800 for English and 800 for mathematics. Questions are multiple choice, single correct answers. Okay, there is no negative marking on SAT. Negative marking नहीं होती है, ये सब
डिजिटल हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। तो सिलेबस में क्या है, इंग्लिश और मैथ्स का टेस्ट है। इंग्लिश इज मोर अबाउट योर कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड अंडरस्टैंडिंग। मैथ्स इज टिल स्टैंडर्ड 10th। 95% सिलेबस स्टैंडर्ड 10 तक का है, ओनली 5% इज इंट्रोडक्टरी लेवल। तो it's completely manageable no matter what stream you are going for। 10th तक का मैथ्स इसमें आता है with, it is not as exhaustive or subject knowledge based like your IIT or medical exams. So you can prepare for this exam in 14 to 16 weeks। 4 महीने में आप बहुत अच्छी तैयारी करके SAT का एग्जाम दे सकते हैं। This is more about conceptual understanding of the topic and then applying it। Like I said, can be done multiple times। Scores are valid for 5 years। तो आपको एक SAT का एग्जाम तो जरूर देना है अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है। आगे बढ़ते हैं। What are the other exams that you need to write other than SAT for studying abroad? इन दोनों में से कोई एक एग्जाम देना है जो आपके स्क्रीन पे है। The first one, International English Language Testing Systems, IELTS, जिसको IELTS भी बोलते हैं, या TOEFL, Test of English as Foreign Language। ये दोनों इंग्लिश के एग्जाम हैं। इन दोनों में से कोई एक एग्जाम आप चूज कर लो, दोनों की वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है। You will have to write that। This is only an English test, and because Indians are not considered as native English speakers, तो हमको बाहर पढ़ने जाने के लिए ये इंग्लिश का एग्जाम देना जरूरी है। बोथ एग्जाम्स हैपन थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट लेके सेंटर पे जाना है, एंड यू हैव टू राइट इट। ऑलमोस्ट डेली एग्जाम्स होते हैं। स्कोर्स आर वैलिड फॉर 2 years। ये ध्यान देने वाली बात है। SAT 5 years वैलिडिटी है। TOEFL, IELTS scores are valid for 2 years। You can write it multiple times again। Every time you write it, आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी, and your best scores are considered। Both exams have these 4 sections on English reading, English writing, English speaking, and English listening। TOEFL हम साल में 2 बैचेस करते हैं, May and November, where we train। It's a small program। 3 हफ्ते में इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। Because the idea is not to teach you English, वो तो आपको आती है। The idea is to make you familiar with the test so that आप उसके questions को वहां पे समझ सकें and you respond in the right way। IELTS, this is slightly more popular, तो इसके बैचेस ज्यादा आते हैं। Almost every week, every Monday we launch a new batch। IELTS आप 3 से 5 हफ्ते में complete कर सकते हैं। You are good to write the exam। In case you are looking for medical education today, I will advise you that medical education follows a different path, and we expertise for US and UK। 2 options हैं। इसके लिए आपको हमसे अलग से टाइम लेके मिलना है। Other than medical, आप अगर कोई भी फील्ड सोच रहे हो, whatever I am talking today applies 100%। सिर्फ मेडिसिन 12th के बाद उसका रूट थोड़ा अलग है, वो हम आपसे अलग से बात करेंगे। इट इज नॉट इन माय स्कोप टुडे। तो हमने 2 चीजें देख ली, SAT देख लिया, TOEFL IELTS देख लिया। ये 2 रिक्वायरमेंट है। और क्या रिक्वायरमेंट है? देयर आर अदर रिक्वायरमेंट्स इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहां पढ़ने जाना है आपको, ये सब लगेगा। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, योर ग्रेड, योर ट्रांसक्रिप्ट, योर रिपोर्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th to 10th to 11th and 12th मिड टर्म। 4 साल की मार्कशीट चाहिए। 9th, 10th, 11th and 12th का मिड टर्म, क्योंकि 12th का फाइनल तब तक आया नहीं होता है जब हम अप्लाई करते हैं। तो ये स्कूल ग्रेड्स चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ओके, स्कूल अकम्प्लिशमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। इफ यू हैव समथिंग इन डांस, म्यूजिक, एलोक्यूशन, आर्ट्स, कुछ भी, डिबेटिंग, आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, आपको कोई प्रोग्रामिंग, एनीथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट, जो आपने क्लासरूम के बाहर कुछ स्किल्स लर्न की हैं, कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, ऑल दैट हेल्प्स, ऑल दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। कम्युनिटी सर्विस, अगर आपने कोई सोशल वर्क किया है, अगर है तो अच्छी बात है, वी कैन ऐड टू योर प्रोफाइल। एनी स्कॉलस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलंपियाड्स अगर आपने दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बट अगर दिया है then we can always take that into account and mention it in your profile। talent search exam at national international level, वो सब काउंट होता है।
ओके, आई होप यू आर मेकिंग अ नोट ऑफ इट। और ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी पूरी। आई विल शेयर अ नंबर विथ यू टुवर्ड्स द एंड एंड यू कैन सेंड अ हाई ऑन दैट नंबर एंड गेट द पीपीटी। और क्या रिक्वायरमेंट है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर स्कूल टीचर्स। वी विल नीड 3 टीचर्स ऑफ योर्स, रादर 2 टीचर और एक स्कूल काउंसलर फ्रॉम 11th 12th, where they will write something called as LOR, letter of recommendation, where they'll talk about your strength, your weakness, some positive aspect, कोई experience आपका, और वो आपको कैसे rate और recommend करते हैं। ये मस्ट है, टीचर्स के साथ ये लेटर लेना जरूरी है। देन एप्लीकेशंस विल हैव पर्सनल एसेज, जिनको हम एसओपी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, वी मे बी रिक्वायर्ड टू राइट मिनिमम 1 to 8 एसेज पर यूनिवर्सिटी। तो एसेज लिखने पड़ेंगे जब हम अप्लाई करेंगे, एंड एसेज वुड बी ऑल अबाउट यू, योर करियर गोल, योर मोटिवेशन, योर फेलियर, योर सक्सेस, क्यों करना है जो करना है, एंड सो ऑन। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, एसएटी चाहिए, टॉफल आइल्स में से एक एग्जाम चाहिए, 9th से लेके 12th मिड टर्म तक की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, एलओआर एसओपी चाहिए। इसके अलावा इन केस यू हैव extra curriculars, you have community service, you have Olympiads, that will add to the profile. I hope ये सब आपको clear होता जा रहा है। I am moving to the next part of the webinar where I am talking about can studying abroad be made plan B? क्या आप इंडिया को प्लान ए बना के आपके इंडिया के जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है उनमें कोशिश करने के साथ साथ क्या आप इसको प्लान बी बना सकते हैं, इज व्हाट आई एम गोइंग टू टैकल नेक्स्ट। चलिए, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। So, at UT, we always advise that whenever you are looking at studying abroad, start as soon as you have made that decision. It could be even in 10th standard. हमारे स्टॉक में there is one student from 9th 10th standard. The moment you decide कि आपको बाहर पढ़ने जाना है, take your SAT as early as possible, and then you can focus on your Indian exams. So the idea is take SAT. Ideal time is 11th. अगर आपने 10th में decide कर लिया, advantage लो, 10th में ले लो पहला attempt. SAT एग्जाम ले लो 11th में। इंडियन एग्जाम्स पे फोकस करो, आपके बचे हुए 11th और 12th पे। आपको ज्यादा टाइम मिलेगा फॉर योर इंडियन एग्जाम्स। अगर इंडियन एग्जाम्स में कुछ अच्छा नहीं होता है, execute your plan B, which is going abroad, because SAT is not so much time consuming, या उतना bandwidth आपका consume नहीं करेगा। चलिए, let me show this to you. So 50% of audience today are in their 12th standard. There is nobody who has passed 12th या जिसने बोर्ड एग्जाम दिया है। In case if there is someone, आप मेरे से क्वेश्चन आंसर सेशन में बात कीजिएगा and we can meet separately to discuss your case. So let's say guys, you have come to your 12th standard. मैं आपको पूरी टाइमलाइन समझा रहा हूँ इस स्लाइड में, ध्यान से देखना, 2 मिनट दूंगा मैं इस स्लाइड पे। So in case you have come from 11th to 12th and you have entered your 12th standard, आपका टाइमलाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। The first thing would be, जैसा मैंने कहा था, appear for exams. तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करना है that अगस्त में जो SAT हो रहा है, without getting late, if you don't want to get late and you want to create a backup option in terms of studying abroad, आपको SAT अगस्त मंथ में दे देना है। अगस्त मंथ में SAT देना है तो उससे 4 महीने पहले, मतलब अप्रैल मंथ में आपको उसकी ट्रेनिंग चालू करनी है हमारे साथ। TOEFL हम अक्टूबर में देंगे। सो दीज आर द एग्जाम्स दैट यू विल अपेयर फॉर। इनकी ट्रेनिंग अभी चालू हो जाएगी, अगस्त और अक्टूबर में हम एग्जाम्स दे देंगे। आफ्टर यू हैव गिवन योर एप्लीकेशन एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, essay राइटिंग, LOR राइटिंग, ट्रांसक्रिप्ट बनाना, वो सारा काम अक्टूबर से, और एप्लीकेशन लगाना सबसे इंपॉर्टेंट, वो सारा एप्लीकेशन वर्क this October to this December will finish और आपके सारे एप्लीकेशंस लग गए। ये 12th वालों की टाइमलाइन है। आगे चलते हैं। आपने अगर अक्टूबर से दिसंबर में एप्लीकेशन लगाया, नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट, दिसंबर टू मार्च आपने अभी अपना बोर्ड एग्जाम लिखा ही नहीं है, दिसंबर टू मार्च में आपके एडमिट डिसीजन अलग अलग टाइम पे आने लग जाएंगे। मान लो आपने 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया एंड यू गेट 7 एडमिट्स, तो वो 7 एडमिट्स दिसंबर से मार्च के बीच में आपको डिसीजंस मिलेगा और आपको पता चल जाएगा वेयर आर यू लैंडिंग इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहां भी आपने अप्लाई किया है। March 25 you will write your board exams for 12th.
By May 25 you will decide कि मुझे जो 7 एडमिट्स आए हैं मुझे इनमें से कौन सी एक जगह जाना है. सब जगह तो जा नहीं सकते, एक ही जगह जा पाओगे. तो by May you will have to decide आप कहाँ जाएंगे. आपका जून जुलाई would go into visa and August you will depart for your admitted accepted university. तो ये पूरी टाइमलाइन है जो 12th वाले बच्चों के लिए है. ज्यादा अटेम्प्ट बचा नहीं है आपके लिए, रादर अब एक ही सेवियर है, एसएटी अगस्त. तो आपको अगस्त में एसएटी दे देना है ताकि ये पूरा टाइमलाइन रिस्पेक्ट हो जाए एंड यू डोंट मेक एनी मिस्टेक एंड यू डोंट मिस ऑन एनी ऑप्शन. विदाउट मिसिंग एनी ऑप्शन वाला टाइमलाइन है ये. आई गो टू 11th स्टैंडर्ड. I think there were around 40% of my audience today in 11th standard. मैं इस पे बात करता हूँ आपसे. माइलस्टोन वही रहने वाले हैं. You will have same milestone. Exams वही देना है, वो देना है, but because you are deciding at the right time, आपके लिए ये चीजें spread हो जाएंगी and you will get more time to bring in more quality to your application. So you have multiple attempts to write SAT. We advise, जैसा मैंने पहले भी कहा, जल्दी लेके खत्म कर दो. Sit tight with SAT score and focus on your school and Indian exam. तो क्योंकि 11th का रिजल्ट बहुत मैटर करता है स्टडीइंग अब्रॉड में. एसएटी 24 आप अगस्त में ले सकते हैं, दिसंबर में ले सकते हो, अक्टूबर में ले सकते हो, दिसंबर में ले सकते हो. आप मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो, अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए कर सकते हो. तो अप्रैल में चालू करो कोर्स, अगस्त में पहला अटेम्प्ट दे दो, सेकंड अक्टूबर दिसंबर में वापस दे देना. दैट्स द ग्लोबल ट्रेंड. 2 बार बच्चे देते ही. टॉफल या तो इस नवंबर में दे दो और यू हैव ऑप्शन नेक्स्ट जून में. जैसा आपको ठीक लगे यू कैन राइट योर टॉफल एग्जाम. अप्लाई कब करना है? नेक्स्ट सितंबर टू नेक्स्ट दिसंबर. आपका पूरा एप्लीकेशन वर्क, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, एलओआर राइटिंग, एसओपी राइटिंग, रेज्यूमे, ट्रांसक्रिप्ट. तो अगर आप इसको देखो, आपको एसएटी की तैयारी एक बार करनी है, फिर 11th और इंडियन एग्जाम पे फोकस करो, नेक्स्ट ईयर से अपना एप्लीकेशन वर्क चालू करो. उसी तरह से आपको एडमिट आ जाएगा दिसंबर टू मार्च 26. 11th में जो अभी गए हैं दे विल राइट देयर बोर्ड एग्जाम इन मार्च 26. तो बोर्ड एग्जाम लिखने से पहले ही आपके एडमिट डिसीजंस आ जाते हैं, आपको सब पता होता है आप कहाँ जाने वाले हो. बाय May 26 यू डिसाइड, जून जुलाई 26 आपका वीजा, अगस्त 26 इज योर डिपार्ट. दिस इज द टाइमलाइन फॉर 11th गोइंग स्टूडेंट. जो बच्चे 11th में आ गए हैं ये उनका टाइमलाइन. लेट मी स्टे देयर फॉर here for 5 seconds so that you absorb and understand ये क्या हो रहा है. चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है, I go to 10th timeline. Everything remains same. मैं क्विकली बता देता हूँ, बट आपके पास समय ज्यादा है चीजों को करने के लिए, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए. एंड you would write your board exams, 12th board exams in March 27 and by May 27 you will freeze it and August 27 आपका डिपार्चर होगा. ओनली थिंग इज इट हैज एक्सपैंडेड. आपको ज्यादा समय मिला, ज्यादा अटेम्प्ट्स मिले और अपनी प्रोफाइल पे काम करने के लिए ज्यादा समय मिला. सो दिस इज 10th टाइमलाइन. चलिए, लेट मी गो एंड टेक इट अ स्टेप टू नेक्स्ट लेवल. अब इसमें और बात करते हैं. एसएटी एग्जाम और स्टडीइंग अब्रॉड इज बोर्ड इंडिपेंडेंट. वी ऑफन गेट दिस क्वेश्चन कि क्या हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हैं या हम आईसीएससी आईएससी बोर्ड में हैं या सीबीएसई बोर्ड में. कैन वी गो एंड स्टडी अब्रॉड? द आंसर इज एब्सोल्युटली 100%. Studying abroad is a phenomena which is board independent. You could be in CBSE, ICSE/ISC, state board, IB board, कोई फर्क नहीं पड़ता. Rather, every year we have students in 3 figures and 90% students are from CBSE, ICSE और state board. 10% IB board से आते हैं और सभी को admits आते हैं. So it is board independent. Like I said, SAT is stream independent. You could be from science stream, commerce stream, arts, humanities, maths तो 10th level तक का ही आता है and we train you on that. And it is SAT is standard independent. Rather आप ये 10th standard में भी दे सकते हो in case you are ready. So you can write it in 10th, 11th, 12th, whenever you think you are ready for it. Okay? चलिए, quickly to tell you and फिर मैं cost, scholarship उन सब पे आता हूँ. What do we do at UT? So we help you with foundation programs. अगर आप 9th-10th में हो, हमको foundation, profile building, profile enrichment, क्योंकि मैंने आपको बताया था studying abroad is all about your marks
प्लस हु यू आर एज अ पर्सन, क्या अचीव किया है अपने लाइफ में, तो आप आपके प्रोफाइल पे काम कर सकते हो. In case you are in 11th, 12th, we can help you in two ways. We can help you with all your training needs. SAT, TOEFL, IELTS, हम वो सब कर सकते हैं. And application support, where we do university shortlisting, LOR writing, SOP writing, हम ये सारा काम आपके लिए कर सकते हैं. So foundation SAT, we are starting a batch in case you are in your 9, 10. ये वाला program Sunday run होता है 2 hours per week. It's a 15-week program for 9, 10 student. It's a foundation program. In case you are in your 11th or 12th, we have rolling batches. We do 5 batches in a year. Right now, we are starting with an April batch. This will be 4 hours per week का program. Saturday, Sunday चलेगा. Saturday evening 6:30 to 8:30 and Sunday mornings 10 a.m. to 12 noon. 14 weeks तक एक बैच चलता है and we prepare you for August attempt of SAT. Batch we are launching from 14th April. Then we can help you in application support, आपकी profile building, profile matching, university shortlisting, LOR writing. Professors generally लिखते नहीं हैं LOR, तो we write it on their behalf. essay writing हम बच्चे के साथ मिलके सारा काम करते हैं, उसका पूरा application kit बनाते हैं, application लगाते हैं, and we get you all your admits. So our batch for this, depending upon you are in 11th or 12th, जब आप किसी भी क्लास में हो, August SAT के लिए we are starting from 14th April, which is next Sunday. I'll tell you how do you contact us. चलो आगे चलते हैं. तो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन इज अ यूनिक प्रोग्राम बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, देखिए एसएटी देना सिर्फ एक पार्ट है उसका. The other bigger part is applying to universities, especially foreign education में. इंडिया में एग्जाम दो, स्कोर आता है, आपकी काउंसलिंग होती है, आपको एडमिशन मिलता है या इंटरव्यू होगा एक बीच में. बट इन यूएस स्कोर आने के बाद आपको कोई नहीं पूछता है, you will have to create an application. तो हम यूटी में कैसे काम करते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन पे? There are 3 big important help area. First, there is a mentor who will work with the student. अब ये mentor क्या कर रहा है? University application strategy, selecting the university, what kind of profile you have, वो सारा काम mentor कर रहा है. Then there is a content expert who is a professor who understands university writing. LOR में क्या लिखना है, essay में क्या लिखना है, resume कैसे बनाना है, and so on. Then there is a coordinator who understands all your deadlines, document requirements, passport validity, ये सब. ये तीनों मिलके बच्चे के साथ one-on-one काम करते हैं एप्लीकेशन पे, and overall a comprehensive support is given while filing the application. So this is how we work in UT for university application. हमारी जो classes हैं, the classes are available at UT खारगर branch physically. अगर आप physically नहीं करना चाहते हैं, you have option of doing it on online. तो दोनों है. You could do it physically in classroom, you could do it online if there's a distance issue or some other problem. आप classes interactive way में online कर सकते हैं, live classes, professor teaching to you through Zoom, sharing board, material, everything, और ये training होती है. Test, assignments, everything is online क्योंकि test ही digital है. The faculty team is led by Mr. Anubhav Sinal, who is also our managing director. वो lead करते हैं team को, followed by me. I take some part of English, I take some part of mathematics. We have Professor Deep Shikha, our English professor, and then we have Professor Uday Paliwal. So overall, Uday Paliwal ji maths लेते हैं. Overall, you know, the 4 of us, we carry more than 100 years of experience cumulatively in training students for various competitive exams, including SAT. कुछ results की बात कर लेते हैं. So we have got some excellent results. ये काव्या जयराम है जो कॉर्नेल आईवी लीग दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज को बोला जाता है. यूएस की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज आईवी लीग हैं. ये कॉर्नेल गई है, ये अपना फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट कर रही है और वो वहां पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में है. Then this is समर्थ जैन जिसको 100% फंडिंग मिला फ्रॉम यूपेन. यूपेन भी एक आईवी लीग है और ये 21 में गया था, अब ये 4th ईयर में एंटर कर रहा है और नेक्स्ट ईयर ये पास आउट हो जाए. These are some of our students. यहाँ जगह की कमी है तो I have put on some names and scores. So these are some of our students who have got some phenomenal results on SAT. 1500 का स्कोर हम हर बार ब्रीच करते हैं in every attempt. So these are some of our latest
SAT results. These are some of our admits. So आपने काव्या को देखा कॉर्नेल, अतुल्य गोइंग टू ड्यूक, अगेन आईवी लीग, हार्दिक IIT बॉम्बे का स्टूडेंट है, वो मास्टर्स करने जॉर्जिया टेक गया है, जागृति, अजिंक्य ये इस साल कार्नेगी मेलन जा रहा है, एज आई स्पीक टू यू अपने वीजा के एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है, दिया शिव पूजे यू मिशिगन टॉप यूनिवर्सिटी, नैनिका इसको यूके की टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL से एडमिट है, then UCLA, UC schools में Anushri, and so on. There are various top admits. This is UT's footprint across the globe. So you will see that we majorly, we have our students in 55 universities in US. ये बढ़ता ही जा रहा है नंबर. Canada 8 universities, Ireland, UK, Sweden, Germany, Dubai, Australia 5 universities में हमारा footprint है. So this is increasing, and this is how UT serves students and help them with placements across universities across globe. Okay, now coming down to आपको कहाँ पढ़ने जाना चाहिए, where should you go for studying abroad, which country, which university should you decide? The first deciding factor should be language. Since I'm assuming here, and this assumption is a safe assumption, that English is one language that we are more comfortable with. The other option would be non-English, unless and until आपको वो language आती है तब तो ठीक है, नहीं तो English speaking. कॉलेज की रैंकिंग एक फैक्टर होगा जिसको आपको देखना चाहिए, एकेडमिक स्कोर्स के क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द काइंड ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्वड इन स्टडीइंग इनटू दैट कंट्री इंक्लूडिंग द लिविंग कॉस्ट, आप क्या पढ़ना चाहते हैं और उस कंट्री में वो वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, एंड क्लाइमेट एनवायरमेंट, आपके रिलेटिव्स वहाँ हैं कि नहीं, वर्क वीजा मिलेगा कि नहीं, ऑल दीज अदर प्रेफरेंसेस टुगेदर, ये 6 चीजों को मिला के ये कंट्री और यूनिवर्सिटी का डिसीजन होता है, where we of course help you on one-on-one basis. So language preference is that English speaking country में जाइए because it will be comfortable for you not only inside the course but living, surviving in that country. Of course, these are English speaking country. Needless to say, US is top global choice not only for Indians but for students across the world. They go to US, followed by Canada, Australia, New Zealand, UK, Singapore. There are various other countries which are English speaking and good for you to study. Coming down to college rankings, there are various ranking agencies in the world like QS, US News, etc. They publish various rankings and इनको हम use कर सकते हैं to shortlist our universities. These are some of the, this is one sample data. If you look into top 100 universities in the world, अगर आप QS रैंकिंग उठाएंगे और उसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज देखेंगे, the data tells you very clearly that US has maximum share of it. तकरीबन 13 यूनिवर्सिटीज टॉप 25 में and 31 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में US से आते हैं, followed by UK, Australia and so on. These are name of some of the top universities. मैं इसमें अभी नहीं जा रहा हूँ. This possibly is something that you'll have to decide later. Now, you may ask me what is the score combination? GPA का मतलब होता है grade point average. तो आपके स्कूल के जो परसेंटेजेस हैं उनको GPA में कन्वर्ट कर देंगे ऑन अ स्केल ऑफ 4. तो स्कूल का मार्क्स प्लस SAT के स्कोर के कॉम्बिनेशन से, दिस इज अ वेरी रफ गेस्टिमेट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप 1500 प्लस स्कोर करते हैं एंड इफ यू आर अबव 95-90% स्टूडेंट, देयर आर चांसेस कि आपको टॉप 25 universities of the world में से कहीं से admit आ जाए, and so on. This is what this table is talking. Now, the all important slide, कितना खर्चा आएगा अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं. So first, let me talk about US. The cost that I am going to share with you, this includes tuition cost, this includes your living, food, boarding, lodging cost. ये सब मिला के ये जो मैं है आपके साथ खर्चा शेयर कर लूं. Now what we have done is हमने कॉस्ट को 3 buckets में, 3 buckets, we have divided it into 3 buckets. Under each bucket it is purely a division of cost. इसमें क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है. Quality has been ensured in सभी buckets में आपको क्वालिटी मिलेगी. So the first bucket is economical bucket. इसमें वो यूनिवर्सिटीज आएंगी
जो इकोनॉमिकल बजट में आती हैं वो मैं अभी डिफाइन करूंगा। इसमें हर तरह की क्वालिटी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेगी। सेकंड बकेट हमने बाइफर्केशन नाम दिया है मिड रेंज, एंड द थर्ड कैटेगरी इज प्रीमियम, प्योरली ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट। और कॉस्ट यहाँ पे क्या इंक्लूड कर रहा है? लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन कॉस्ट, रहना खाना पीना, वो सब आ गया इसमें, ट्रैवल नहीं आया बस। सो इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटीज में 15 से 25 लाख रुपए साल का खर्चा आएगा। 4 साल का आपका बैचलर्स का कोर्स होगा। 60 लाख टू 1 करोड़ का खर्चा आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। अभी हमने कोई स्कॉलरशिप और किसी और चीज की बात नहीं की है, प्योरली कॉस्ट की बात कर रहे हैं। मिड रेंज वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे खर्चा 25 से 40 लाख रुपए है, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स योर expenses would be between 1 CR to 1.6 crore rupees. Premium universities are universities where your annual expense would be 40 to 60 lakh of rupees and your total expense over 4 years would be 1.6 to 2.4 CR. This is all US. आप अगर ऑस्ट्रेलिया लेंगे, आप अगर कनाडा लेंगे, तो ये खर्चा 20% से आप कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट डॉलर रेट डिफरेंस। सो ऑल इन ऑल इफ यू लुक एट योर एक्सपेंसेस कुड बी ऑन एन एवरेज, अगर आप इसमें एवरेज पकड़ेंगे, somewhere between 1.2 CR spread over 4 years. क्या ये पूरा पैसा आपको डे 1 पे चाहिए? नहीं, आपको शायद फर्स्ट ईयर का एजुकेशन कॉस्ट 30 लाख रुपए जितना पैसा डे 1 पे लिक्विडिटी शो करना है, and then things can be taken care. Now coming down to scholarships, this is our latest scholarship figure. अभी तक हमको, अभी भी एडमिशन डिसीजंस आ रहे हैं, अभी तक हमको टोटल 4 करोड़ की, मोर देन 4 करोड़ स्कॉलरशिप मिल गई हमारे बच्चों को, एंड दीज आर वेरियस यूनिवर्सिटीज जहां से स्कॉलरशिप्स ऑफर हुई हैं। तो स्कॉलरशिप कैसे मिलती हैं? देखिए, स्कॉलरशिप मिलने के 2 तरीके हैं। The first is at the time of application. When you are applying to US universities, with your application, at the time of application, आपके scholarship decisions आएंगे। मैं फिर बता देता हूँ, scholarship decision किसके basis पे आएंगे? SAT score, 9th, 10th, 11th, 12th grade and overall profile. तो वो क्या होगा? merit based होंगे या नीड बेस्ड होंगे, आपके मार्क्स के बेसिस पे होंगे, या अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत वीक हैं तो उसके बेसिस पे होंगे। लेट मी टेल यू, क्लोज टू 20 to 30% स्टूडेंट्स ओनली गेट स्कॉलरशिप अंडरग्रेड के लिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा तरीका क्या है स्कॉलरशिप का? आफ्टर यू ज्वाइन द कैंपस, आपको जब आप कैंपस आपने ज्वाइन कर लिया, उसके 6 महीने के अंदर यू स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ TARALA। ये क्या होता है? टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप, लैब असिस्टेंटशिप। आपको ये असिस्टेंटशिप्स मिलेंगी, आपको स्टाइपेंड मिलेगा व्हाइल यू आर वर्किंग, और ऑन बेसिस ऑफ योर मेरिट यू आर डूइंग वेरी वेल देयर, यू मे गेट स्कॉलरशिप। Close to 80% students get this kind of scholarship after they join the campus. तो जो मैंने बोला था कि आपका 1.5 करोड़ का खर्चा आएगा 4 साल में, that is a very conservative figure. बच्चों को ये स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड्स मिलने लग जाते हैं, तो हो सकता है आपका लैंडिंग कॉस्ट वो 50 लाख रुपए वो खुद मैनेज कर ले, 4 साल में आपको लैंडिंग कॉस्ट 1 करोड़ रुपए हो। इट मे सो हैपन अंडरग्रेड्स, बैचलर्स के लिए। Education loans are very easily available if you get admits from high-ranked universities, reputed universities. Education loan should not be a problem. They are easily available by government, private, NBFCs. Loan is given in name of students. Parents will act as guarantor. जहाँ पे parents की कोई property को वो उसके against as a guarantee वो आपको loan दे देंगे। And you have flexible repayment terms. आपको अभी कुछ भी पे नहीं करना है, आपको 6 साल बाद से अपना EMI चालू करना है, आपको अभी इंटरेस्ट पे करना है, कुछ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अभी से ही पे करना है। यू कैन डिसाइड, फर्स्ट पेमेंट कैन कम आफ्टर 6 years ऑल्सो। ऐसे लोन्स आपको मिल जाते हैं एजुकेशन लोन्स। जनरल टेन्योर कुड बी 15 to 20 years तक आप लोन ले सकते हैं, एंड दे आर चीपर कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ लोन्स। 8 to 9% लोन्स, 8 to 9% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। So this is about education loan. Now, other factors, there are more than 5,000 universities to choose from. It is important to select your universities wisely.
and UT would help you in all of this. So overall हमने इस program को इस तरह से बनाया that you could do it in 10th, 11th, 12th, the way you want to. We have combined it with your school studies, entrance exams, and it's a good plan B in case you want to pursue it. So we started with a lot of questions. I am sure मैंने उसमें से कुछ questions answer करने की कोशिश की है. You can also visit our website at utaspire.in and seek more information there. तो सारी information वहाँ पे available है. If you have more questions, we'll have question answer session now. You can ask me. हमने काफी सारे आंसर किए हैं. अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस किसी कंट्री स्पेसिफिक हैं, कोई कोर्स स्पेसिफिक है, फील्ड एग्जाम स्पेसिफिक है, please feel free to talk to me. There is one more way to get in touch with me and my team. You can call my colleague Mrs. Jyoti. उनका नंबर है 7718898822 utnmjyoti@gmail.com पे. You can write to her. She will fix an appointment. You can meet me or my counselors team. You can decide upon your program. If required, then you can enroll with us. If you want a PDF of PPT, ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, आपको इसकी एक कॉपी चाहिए, अपनी पर्सनल कॉपी चाहिए, you will have to send a hi to this WhatsApp number. आप इस पे hi send कीजिए. आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं ज्योति से बात करके, या आप इस पे hi send कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा. After as soon as we end the webinar, you will get a PDF. So thank you so much once again for attending this. There is also a feedback link in the chat box. Please ensure that आप वो feedback हमको provide करें so that we improve our webinar experience. With this, I come down to end of my talk. In case you have any questions, please unmute yourself, possibly put your video on and ask your question. I am available. Thank you so much. Any questions that you may have? Hello, sir. Hello. Yeah, can you just put that number in the chat so that we can just copy paste and call the number, or send a hi for that PDF that you were talking about? Yes, sure. So I put it again on the screen, and I'm also putting it in the chat box. 7710004690. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. And another question is, like, is it advisable to send our kid abroad? Then we don't have any relatives over there. Like, in case of any problem happen, like, it could be emotional problem also. It could be like health-wise also. Do you think if you don't have any support system there, is it advisable to send our kids over there? Okay. So, madam, rather than answering this directly, आप मुझे permit कीजिए to answer it indirectly. See, I'll tell you what does data say. Now, we have been in this sector for long, and for every 100 students, madam, जो हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, let me tell you, 85 students will not have any relatives in these foreign countries where they are going. 15% बच्चों का कोई ना कोई रिलेटिव कोई होता है. Having said that, रिलेटिव होने के बाद भी all these programs where we recommend, और हम जो काम करते हैं, because these are, ये छोटे बच्चे हैं, अभी 12th पास किया है, we strongly recommend and only do universities where they have residential program at least for first year. तो अगर आपका कोई रिलेटिव भी है, और यूएस इतना बड़ा है, जरूरी नहीं है जिस स्टेट में यूएस है आपके रिलेटिव हैं वहीं पे उसको एडमिट मिले. एक एंड से दूसरे एंड यूएस में अगर आप एयर से भी जा रहे हैं तो आपकी 6 से 7 घंटे की फ्लाइट होती है. तो मैं आपको बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ, since these are big campuses, residential programs, and 85% of my students don't have any relatives when they go abroad, so that ways these campuses are as secure as any Indian campus. अगर आप यहाँ बोर्डिंग में या रेसिडेंस में किसी बच्चे को, मान लीजिए आपने बंबई से दिल्ली भेजा है, बैंगलोर भेजा है, चेन्नई भेजा है, और वो वहाँ पे रह रहा है, it is as safe as that campus. Having a relative is a mental comfort which I will not deny. मैं वो deny नहीं करूँगा, but मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों के relatives वहाँ नहीं होते हैं,
और वो fully residential programs में आप पढ़ते हैं. So they are able to what is say adjust over there cultural thing that everything is different. So Yes. how well they are able to accept that culture, the difference in that comfort level also, where they will be all alone by themselves, like everything, from the Yes. eating to everything. That I'll cultural give you shock that, is madam. there, na? Very Uh, important. Yeah, very important point you're raising, madam, and thank you for asking this. So, when we do that university selection, आपके साथ जब वो process करेंगे, you'll understand. Taking account into Indian diaspora, कि वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में इंडियन डायस्पोरा कैसा है, एशियन डाइवर्सिटी कितनी है, यू विल सी दैट एनीवेयर बिटवीन 10% to 60% आपको इंडियन एशियन डाइवर्सिटी दिखेगी. लेट्स से आई एम टॉकिंग मोर अबाउट यूएस राइट नाउ. तो यूएस में अब ये फिनोमेना, क्योंकि हमारे ही बच्चे जाते हैं, तो यू गेट कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस, आपको वहाँ अकोमोडेशन में आपके सीनियर से, इंडियन कम्युनिटी से बहुत हेल्प मिलती है. इट इज नॉट आज से 20 साल पहले जैसा नहीं है कि पूरा एलियन एनवायरनमेंट होगा. अब चीजें बहुत बदल गई हैं, तो आपको बहुत अच्छा इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट वहां पे मिलता है. बीट फूड, हाँ ऑफ कोर्स फूड में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, शायद सब कुछ गरम गरम खाने को नहीं मिलेगा, बट getting veg option, vegan option or Indian options, they have multiple messes and you decide which mess you want to eat into and you get those choices. Yeah, thank you so much. Like this Ji, was very informative, thank and you. I would applaud you because I found your webinar very specific and to the point as compared to other webinars I've attended. So I have to definitely, applaud you for that. Thank It you, was a Mrs. very Jain. detailed, and I had to think that most of my questions were cleared even before I wanted to ask, but you cleared that in the session itself. So Thank yeah, you. and giving the PDF away is another gesture that I seriously appreciate. And I would really think of enrolling my child in your institute, seeing the, what do you say, the detailed approach that you have given me because, I'm like very happy and satisfied. Thank you so Thank much. you. Thank you. Really appreciate your kind words, Mrs. Jain. This helps us, helps my team to keep Yeah. motivated. तो बहुत अच्छी बात है, ma'am. Thank you so much. I'm glad you liked it. Yeah. Any other questions where I can help you? Okay, Um, so I could yes. keep on asking. Actually, I've many questions, but I don't know. अभी आना चाहिए दिमाग में. Yes. Um, So you can uh, also, I Jen, yeah. you can Yeah. Tell me. Mrs. Jyoti, this is her number, and you can Okay. fix a one-on-one appointment, and maybe there are some questions that you want to ask in person, and we can help you in that case. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you. If there's any question, please feel free to ask. Otherwise, we are done for the day. Thank